सभी डिग्निटरीज़ यहाँ पे जो तशरीफ़ फरमा है, ख़ासकर मैडम किरण मोतवानी जी, डायरेक्टर अलोहा इंटरनेशनल, मुबशर असलम वफ़ाई साहब, आतिफ साहब, हमारे मोहतरम UFs और कोर्स इंस्ट्रक्टर्स, आप सबका आज की तकरीब में सदबार इस्तकबाल और खैर मकदम। So for all the CIs sitting here, this training means upskilling and upgradation, but also to give you an insight that there is a world of opportunities in ALOHA itself that you can explore and where you can excel. So without wasting your further time, we would like to call on stage Madam Kiran Motwani, Director International ALOHA. She'll come here and begin her actual work. Thank you. Assalamu alaikum everyone. It's a great pleasure to be here today. Our first visit was April, October, November again. So it has really been very inspiring for ALOHA International to see the great strength that Jammu and Kashmir has it. And it's not only about children, teachers, unit franchisees, the passion that you see in them. That was the thing that made us take this decision. ALOHA 2.0, we start here in Jammu and Kashmir. Thanks to Brother Mubashir to give us this opportunity to host the first training of ALOHA India 2.0 in Jammu and Kashmir. It has been 3 intense days of training. I really thank all the unit franchisees, master trainers, and not only them, we have a Karnataka team, we have Rajasthan team here. So they are all passionate with one vision to make ALOHA really shine bright in India. They say if you have a plan of 1 year, plant rice. If plan is 10 years, plant trees. And if plan is 100 years, cultivate people. Today's event marks a new beginning for ALOHA. Not only for Jammu and Kashmir, for entire, I would say, global ALOHA International, inshallah. Now that ALOHA 2.0, we are connecting back to ALOHA International and we are starting the same program which it is run internationally. ALOHA India 2.0 is starting. We are so happy to bring in all the innovations and make children prepared for the coming future. And we are so happy that Jammu and Kashmir hosted the first training for the states here in Jammu and Kashmir in Srinagar for our trainers to attend this training and spread the course to all our children across India. They will be benefited with this new things that are coming as per scientific study, all the benefits of attention, concentration in a fun manner. I am coming for the second time for this ALOHA 2.0 training program that we are launching, and we are coming up with a new ALOHA module. It's a very great initiative from ALOHA Jammu and Kashmir to gather all of us from different states and unite us for this special refresher training. It is a good effort, a very commendable and applaudable effort from Jammu and Kashmir ALOHA. It was really surprised to see in Kashmir that, abacus is, it's like, mushrooming. You can see in every street. It's a trend by itself. And they celebrate abacus as a festival, There are a lot of competitions in other states, but especially in Kashmir, they are passionate about this. So that is something very interesting. So I think that is the reason we came for the state level competition also, seeing the passion of the people here. And now we have come for a training for ALOHA Abacus Mental Arithmetic, that is which we are going to launch 2.0, a very interesting program with lot of games and lot of brain development which is going to happen. And I'm very sure this is going to help each and every child. ये बहुत अच्छा है और हम सबको पता है अपडेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
बिकॉज अगर एक पानी एक ही जगह रहता है तो जंग लग जाता है, उस पर जर्म्स आने लगते हैं. सेम इज़ द केस विद एजुकेशन. इट्स नॉट ओनली हेयर, वी नीड अपडेशन इन एवरी फील्ड. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि नेशनल लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पे हुई. हमने भी बहुत कुछ सीखा. बीइंग इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स, स्टिल वी नीड अपडेशन. हमें भी कुछ पॉइंट्स मिले जो हमें लगा अपडेट करना चाहिए अपने सेंटर को, अपने बच्चे को कैसे हम और एक्विटेंट बनाएं बहुत सारी चीज़ों से. तो इट्स वेरी गुड, इट्स अमेजिंग. अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो कि हमें नहीं पता थी, बट किरण मैम ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कैसे हमें करना चाहिए. तो मुझे लगता है ये सारी टीचर्स के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. What motivates me to be in ALOHA is कि जो आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में एज ए टीचर है, वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और उस चीज़ से इंसान चाहता है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सोसाइटी में. जो हम पेरेंट्स से फीडबैक ले रहे हैं वो चीज़ को मतलब वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि इट रियली कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन अ सोसाइटी. देखिए, इफ़ यू आर पैशनेट, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड देन स्काई इज़ द लिमिट. इट्स अ नोबल कॉज. ये एक नोबल कॉज है जहाँ पे हम बच्चों की तरबियत करते हैं, जहाँ पे हमारा ये टारगेट है, ये जो हमारे पास बच्चा आता है, ये हमारे पास कल का फ्यूचर है. ये कल का डॉक्टर हो सकता है, KS IAS ऑफिसर हो सकता है. तो मेरी यही मैसेज है कि इसमें हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को जुड़ना चाहिए और ताकि वो इन बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और इस फ्यूचर को संवारने के लिए आगे आए.